professional communication skills. This is the second module of the series, Job Interview Skills, and this is the second unit of that module titled Preparing for an Interview. I am Ritik Garg, a research scholar at Department of Humanities and Social Sciences, MNIT Jaipur, and I will be your instructor for this particular section. So let's begin. अपने आखिरी यूनिट में सीखा एक जॉब इंटरव्यू होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, एक जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए किन प्रैक्टिसेस का हमें ध्यान रखना होगा और वो कौन से एटिकेट हैं जिनकी हमें आवश्यकता है एक अच्छा जॉब इंटरव्यू देने के लिए। इस यूनिट में हम सीखेंगे एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वो कौन सी ट्रिक्स हैं, वो कौन सी मेथड्स हैं जो हमें अप्लाई करनी होंगी इन ऑर्डर टू गिव अ सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। The first thing that I would like to bring to your notice are the 4 R's of job interview preparation. ये वो 4 R's हैं जो हमें हमेशा याद रखने होंगे एक अच्छे जॉब इंटरव्यू के लिए। It allows for a focused approach to prepare for your upcoming job interview using 4 R's: resume, review, research and rehearse. इसका सबसे पहला भाग है resume. Resume is that document in which you have mentioned your qualifications for the job, your specifications as a person. This particular document that you have presented before the interview needs to be accurate, up to date, it needs to be honest. ये वही बातें बोल रहा है जो आपने सच में की हैं, जो आप सच में हैं। उसे कंसाइज होना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो क्लियरली मेंशन करे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्किल्स हैं। वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें हमेशा बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हमने रेज्यूमे में मेंशन करे हैं वो हमारे पास होने चाहिए और उनकी फोटोकॉपीज भी हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए जब भी हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सेकंड है रिव्यू। रिव्यू से आप समझ गए होंगे, हमें जो भी हमने लिखा है उसको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। We need to know our resume and CV. What we have sent to the company needs to be in our knowledge. हमारे पास वो स्टोरीज होनी चाहिए जो हमारे रेज्यूमे के पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करें। इफ आई हैव एन एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बारे में 2 लाइनें हमें आनी चाहिए बताने में। We need to be ready with examples to back your answers. We need to review our preparation. वो कैसे होगी? जब हम उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एग्जाम्पल्स हमारे हाथ में होंगे कि अगर उन्होंने ये पूछा तो मैंने ये किया था और इससे ये रिजल्ट निकला। We need to be clear on what we can bring to the company as well as the job we have applied for. एक बहुत ही सिंपल तरीका इसका ये है कि हम इन 5 चीजों का ध्यान रखें। आइडेंटिफाइंग आवर स्किल्स, वो सर्टिफिकेट्स, वो कोर्सेज जो हमने किए हैं, वो अकम्पलिशमेंट्स जो हमारी प्रीवियस जॉब या हमारी लाइफ में रही हैं, the values that we bring to the table for the company, and the interests as well as hobbies that we have as a person that will help in the job that we will be going. Next is research. We need to be thorough with everything we can know about our potential employer as well as the job profile that we have applied for. Employer से हमें क्या क्या चीजें हमें उनके बारे में जाननी है। We need to search for their website, उनके LinkedIn profile. We need to look at the corporate culture of that. What are their values? What do they allow? Are they friendly to different communities? Are they inclusive in nature? कौन सी मार्केट में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है? How is the market behaving and how is the company performing in the market? Which are the competitors that the company is facing? की प्रोडक्ट्स क्या हैं उस कंपनी के, की सर्विसेज क्या हैं? We also need to look at them because unless we know them, we cannot do anything. We need to look at the financial chart over the last few years as well as their annual reports to understand the growth trajectory of the company. On the side of job that we have applied for, we need to look at its key specifications. वो क्या मेन चीजें हैं जो जॉब में हमें चाहिए? We need to look at the skills that are required for the jobs and are they matching with the skills that we have got. We need to take expert opinions on that particular job. We need to talk to our friends or peers जो इसी एरिया में काम कर रहे हैं, जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं.
We also need to look at the future areas of growth, avenues of growth, कि इस जॉब प्रोफाइल में अगर हम जा रहे हैं तो 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं. We also need to keep an eye on the average salary side, very important. Economic side में हमें हमेशा ध्यान देना है. We also need to be ready to learn more as a part of being in this job. Always be open to that. इसके साथ साथ हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना है रिसर्च करते टाइम कि हमारे पोटेंशियल इंटरव्यू लेने वाले कौन होंगे, इंटरव्यूअर्स, उनके बारे में भी इफ वी कैन रीड समथिंग, रिसर्च समथिंग, दैट विल बी रियली ग्रेट. The last of these 4 R's is rehearse. Practice does make a man perfect. Because if you're not going to rehearse what you have reviewed, what you have researched, you're not going to crack the job. We need to revisit our past. हमने कौन से internships करी हैं, कौन से career centers में हम गए थे, हमने वहां से क्या सीखा. We need to learn from the mentors we have in the field so that we can get a better idea of the job. We need to have mock interviews. अब अपने फ्रेंड से इंटरव्यूज करवा सकते हैं, घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक मिरर के सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आप उनका आंसर दे रहे हैं एज इफ अ पैनल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ऑलवेज डू दैट. वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, यूट्यूब, गूगल. इन सब के अंदर बहुत से ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. बहुत ही जरूरी है दैट वी नीड टू स्पीक क्लियरली. ज्यादा तेज नहीं बोलना, और हर सेंटेंस के बाद हमें पॉज लेना है, स्पेशली अगर वो एक पॉइंट है. हर आंसर के बाद हमें पॉज लेना है. हमें ऐसे जल्दी जल्दी में सब कुछ नहीं बोलना है. लास्ट, वी नीड टू लर्न एंड इम्प्रूव अपॉन ईच ट्राई. अगर ये जॉब इंटरव्यू नहीं भी हो रहा है लेकिन हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है. एक बार हमें पता चल गया कि वो कौन से 4 R's हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा एक जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, हमें अब ये जानना होगा कि एक जॉब इंटरव्यू के कितने स्टेजेस होते हैं. आमतौर पर 5 स्टेजेस होते हैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए. देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ अ जॉब इंटरव्यू. इट बिगिंस विद आइस ब्रेकिंग और ओपनिंग स्टेज, in which we go for the greetings. We enter the room, we greet the interviewers, have our initial introductions with all of them. That is when we make the first impressions, जिसके अंदर behavioral etiquette बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली यूनिट के अंदर डिस्कस किया था. सेकेंड स्टेज है पर्सनल क्वालिफिकेशंस एंड इंटरेस्ट इन द पोजीशन. यहां से इंटरव्यू शुरू होता है. When the candidate has been asked questions. Normally ये क्वेश्चन शुरू होता है tell me about yourself क्वेश्चन से, जिसके अंदर you have to introduce yourself to the panel. Here you talk about your abilities, your skills, your work experience, your past life. आपने क्या accomplish किया है पिछले कुछ सालों में, कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको इंटरेस्ट करती हैं, और वो बहुत जरूरी क्वेश्चन, what makes you a perfect match for the job? What are those 5 points that you can think of, the skills required for this job that you've got? इसमें आप बात करते हैं कि आपके इस जॉब से गोल क्या है, what are you aiming for through this job, और आपके लाइफ में इन जनरल एम्बिशंस क्या हैं. थर्ड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब प्रोफाइल, where the discussion shifts from you the individual to the company and the job with the individual. In this particular section, the employer may test your knowledge of the company and the job. This is where the research part comes into the picture. Why do you want to work for this company? What do you know about this organization? What are your expectations from this job? ऐसे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपनी रिहर्सल के दौरान इन सब का ध्यान रखना है that I do know the answers of these questions which will be asked to me in the interview. बाकी के general questions related to the job and company will also be asked. Example, what are your geographic preferences? Are you willing to relocate if the job is situated in another city, another climate? Are you okay with timings? All of these are the kind of questions that you might face and you need to be prepared for them. Fourth stage is candidate questions. Usually एक job interview खत्म हो जाने के बाद पैनल पूछता है कैंडिडेट से, do you have any queries? Do you have any comments to make? Do you have any questions to ask? At that time, you should never say no, I have no queries.
You should always come up with a few questions because that will show that you are also curious and interested in the job. Your chance to ask questions about job and the interview in general. Questions like, what kind of a job training do you provide? What makes your company different from its competitors? Who, according to you, is the ideal candidate for this job? Or what are the future avenues of growth in this particular job? ये ऐसे बहुत सारे questions. और आखिरी, closing and follow up. This is how you end a presentation in job interview. We need to find out who makes the next move, whether they have ended their questions and it is time for you to leave now or not. We need to always thank them by giving proper greetings, that they have given you their time, their patient listening, and the interaction that you had with them. You need to remember their names during final greetings as well. इंट्रोडक्शन के दौरान जब हमने नाम लिए थे वही नाम हमें एंड में भी लेने होंगे, अदरवाइज इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है. We need to also evaluate our performance and look for feedback later. Post we exit from the interview, हमें सेल्फ इवेल्युएशन भी करना है और अगर कोई फीडबैक का चैनल है उसमें भी ध्यान देना है. Always, always, always send a thank you note to all the panelists. उसके बिना कभी भी हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा. It will show that we are enthusiastic and looking forward to a response from them. Whenever an employee is looking for a perfect candidate for their job, they wish to know about how the candidate will be performing in the company. क्या वो एक टीम प्लेयर है? क्या वो मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है? क्या उसका बिहेवियर ऐसा है जो कि कंपनी के साथ अलाइन होता है? ये जानने के लिए सबसे इजी तरीका जो एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं इंटरव्यू में वो है बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसके अंदर दे चेक how your past behaviors in the job, previous job, and how you have reacted in those situations which were troublesome, stressful, difficult to handle. उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं whether you are fit for this particular job or not. To ace these kind of questions, there is a very prominent method used, which is called the STAR method, where STAR, 4 letters of this word STAR, stands for 4 things: situation, task, action, and result. What is the STAR method? The STAR method is a structural manner of responding to a behavior-based interview question by discussing a specific topic or issue during an interview using specific real-life examples. Whatever you have done in the past will be a guide to how you will be behaving in the future. What is the use of this particular kind of method? It helps you to explain in a simple yet powerful way how you handled specific work situations and challenges in the past job or in your previous profession. काफी सारे नाम हैं इस particular method के. It is also called at times CAR method, CAR method, where C stands for context challenge. At times, it is also called PAR method, where P stands for problem. In simple, it is about how you did in your past and using it as an example to show how you will perform in the future. The STAR method, 4 parts, beginning with situation. What is a situation? It will be an event, a project, or a challenge where you describe a specific event or situation, not a generalized description of what you have done in the past, but how you did in a specific situation you handled in the past. Second part of it is task. What were the tasks in that particular situation that you were handling, that you were assigned? What were your responsibilities in that situation? आप किस गोल के लिए काम कर रहे थे उस सिचुएशन में, वो आपको बताना. Third, what was the action that you took? The steps and procedures taken by you to relieve or rectify the situation presented before you, ये आपको इस सेक्शन के अंदर क्लियर करना है. आपने कौन से वो स्पेशल स्टेप्स लिए
एंड आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने में। फोर्थ पार्ट, रिजल्ट, रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस दैट वर टेकन। आपने सिचुएशन आपको मिली एक, उस सिचुएशन में आपका एक टास्क था, उस टास्क से आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ वो आपको इधर बताना है। व्हाट हैपेंड, हाउ डिड द इवेंट एंड, व्हाट डिड यू अकम्प्लिश फ्रॉम दैट इवेंट, एंड आपने उससे क्या लर्निंग्स की। इसको आगे समझते हैं हम, लेकिन उससे पहले वी नीड टू नो व्हाट आर बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस। वो कौन से क्वेश्चंस है जिनका हमें रिप्लाई देना होता है स्टार मेथड यूज करके। These are questions about specific situations in the past work experience and how you as a candidate handled them or behaved during them. एक रिक्रूटर इन क्वेश्चंस को क्यों यूज करता है? एक रिक्रूटर इन क्वेश्चंस को यूज करता है to assess the candidate's answer, to see if they are fit to take proper initiative and action in the future job. आपने अगर अपनी प्रीवियस जॉब में एक मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया और उसको अच्छे से सॉल्व किया, उसका रिजल्ट अच्छा रहा, तो अगर वो आप अपने इंटरव्यू में बता पाएंगे तो कैंडिडेट की इमेज इंटरव्यूअर के सामने ऐसी जाएगी that this particular candidate is willing to work hard to get the desired result in tough situations. The recruiter in such questions is not looking for a simple answer of yes and no, but a very detailed story of what you did in the past experience. कैसे शुरू होते हैं क्वेश्चंस? सिमिलर वेज होते हैं क्वेश्चंस के शुरू होने के। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू, टेल मी अबाउट अ टाइम when you handled this particular part of the business, or give me an example of your present or of your past experience where you handled large crowd of people, or have you ever done this in your past company, past job? Describe an instance where you have had to, something related to the technical aspect, or simply saying give detailed about something that you did in your previous experience. Then you need to apply star method. How will you apply it? We will look at into now. स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे टैकल किया जाए एक इंटरव्यू में बिहेवियरल क्वेश्चन। सबसे पहला है सिचुएशन, स्टार का एस जिसमें है। इसमें हमें क्या करना है, स्टेज सेट करना है। व्हाट सिचुएशन आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट? We need to begin by giving the context around the specific situation. इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें फ्यू सेंटेंसेस में ही लिमिट करना है, कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। It needs to clearly demonstrate the capability and skill that you are being asked about. मेरे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इस पर्टिकुलर स्किल के बारे में जानना, अप्लाई करना। Second part of it is the T of star, task. Explain where you fit in. What was your role in that particular situation? That is what you have to explain here. Describe the task you had to complete and what your involvement in it was. This part should also be brief and to the point. कोई भी पार्ट इतना लंबा नहीं जाए कि वो बोरिंग हो जाए और वो रिडंडेंट हो जाए। शॉर्ट, क्रिस्प बट क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए ये पार्ट। Third is action. What all were the steps that you took? Describing it. It is your opportunity to showcase your capabilities. आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें आपने किया वो आप यहाँ बता रहे हैं। Explain what steps you took to overcome the challenge and face the situation. Be as specific as possible. Describe each step. हमेशा ये याद रखना है कि ये आपके बारे में है। So always use I, first person. You made this step. You took this decision. Because आपके बारे में बात हो रही है। And finally, the R of the star, the end result. Impressing the panelists with your achievements in that particular situation. What positive impact were you able to achieve in that particular situation? How did you resolve that situation? Make sure आपका आउटकम जो है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि अगर आपका आउटकम नेगेटिव आएगा तो आपका आउटलुक नेगेटिव जाएगा इंटरव्यूअर के सामने, जो कि हम नहीं चाहते हैं। Always focus on what you learned from the experience and how that can help you in the job ahead.
एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं स्टार मेथड को। क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर्स की तरफ से हमारे पास आया है, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ गोल यू हैव सेट एंड हाउ यू अचीव्ड इट। सिचुएशन क्या थी ये आप बताएं। When I first transitioned into a sales executive role in a company A, I was a bit reluctant of meeting my first quarter sales and revenue targets. आपने clearly set कर दिया ये situation थी और मेरा ये skill था। Task. This motivated me to not only meet my sales target in the first quarter, but to exceed that during my next quarter. My goal was to generate new ideas, materials to achieve my targets. आपने बता दिया कि ये स्किल्स आपको एम्प्लॉय करने हैं, ये आपके टास्क थे जो आपको परफॉर्म करने थे उस सिचुएशन में। आपने क्या एक्शन लिए, बहुत जरूरी, सबसे लंबा जो जाएगा। I broke down my goals into smaller weekly goals, monthly targets. I changed my strategy. मैंने अपनी स्ट्रेटेजी भी बदली, जिसके अंदर मैंने सोशल मीडिया को इनकॉर्पोरेट किया। I also learned from my colleagues as well as my manager. एंड इससे मुझे टेक्निकल हैंडलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पता चला। एंड व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इट ऑल? वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी पॉजिटिव, इट नीड्स टू बी short, and it needs to tell what you have learned. With this new strategy, I exceeded my sales target by 10%, and as a result, the company increased its new advertisers by 15% over the same period last year. Very simple, सब चीजें इसके अंदर मेंशन हो गई। नेक्स्ट, द 5 P's ऑफ इंटरव्यू परफेक्शन। बहुत जरूरी है ये भी हमारे लिए जानना कि वो कौन से 5 P's हैं जो अगर हम याद रखेंगे तो हमारा जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छा जाएगा। हमने स्टार मेथड सीखा, लेकिन वो स्टार मेथड हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जब हमें पता ही नहीं है कि हम इंटरव्यू में ढूंढ क्या रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं परफेक्शन। उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले प्रिपेयर करना है। Need to research about the company. We need to look for what are good questions and a good understanding of typical interview questions. उससे क्या होगा? It increases our confidence, positivity and how we are going to handle. Stress level को भी decrease करेगा। Second is practice. Whatever we have prepared, we need to practice. जैसे 4 R's हैं, वैसे ही ये 5 P's हैं। उसमें जो रिहर्स करना था यहाँ पे वही प्रैक्टिस है। हमें इंटरव्यू को ट्रीट करना है लाइक अ कन्वर्सेशन, एक इंटेरोगेशन की तरह नहीं। उसके लिए हमें अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि हम एक्टिवली पार्ट लें उसके अंदर, पैसिवली ना हो। वी नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। हम कैसे ड्रेस कर रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम आंसर्स का कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। What you say must also exude respect and competence at your part for the interview, for the job, for the panelists. उन सब के लिए ये झलकना चाहिए हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारे बिहेवियर में। ऑलवेज पार्टिसिपेट। अपने आंसर्स को हमेशा 2 मिनट की समय सीमा में ही रखें। नेवर से सो मच दैट द इंटरव्यू बिकम्स बोरिंग। और स्टार मेथड में हमेशा ये यूज करें, 20% of your answer should be on the challenge, 60% of it should be on the actions, and only 20% should be on the result. Action is the focus, not your situation, not your result. Because action से ही पता चलेगा what did you do into it. And finally, always infuse passion and your own personality into the interview. Show yourself as a person, as an individual. The interview is about fit. If you are fitting into the job profile or not. You need to show your interestedness and your suitability for the desired job. अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद कंपनी शायद आपको ना ले। With this, we have covered the preparation section of our unit. अगली 2 यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमें रेडी रहना है, उन क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजीज हमें लगानी है और उन मुश्किल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। टिल देन, जस्ट रिमेंबर, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। थैंक यू।